Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to start a very important session and a series of sessions actually. They are relating to government schemes, right? तो government schemes हम already revise कर चुके हैं ministry wise, and the videos for the classes are uploaded on playlist of my channel. PDFs are also uploaded on my Telegram channel, so you can download it from my Telegram channel and the link is given in the description below. So from today onwards we are going to start a new series, that is government schemes revision. So because lot of you complain that आपको याद नहीं हो रही है स्कीम, जस्ट स्कीम्स रिवाइज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सो आई थॉट टू ब्रिंग अ सीरीज़ ऑफ सेशन जहाँ पर हम MCQs के फॉर्म में सारी स्कीम्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे. एंड देन अगर आपने स्कीम्स के जो बड़े बड़े PDFs अगर आपने नहीं भी किए तो काम चलेगा. अगर आपने रिविजन सेशंस देख ली है तो दे आर इक्वली बेनिफिशियल एंड इक्वली इक्विवेलेंट टू दो static lectures, right? So these are important series of sessions जो आपको देखना है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दीज प्लीज़ यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस विथ मी. प्लीज़ अटेम्प्ट, प्लीज़ ट्राई टू टेल कि आपके इसमें से कितने सही निकले, हाउ मैनी एंड हाउ मच डिड यू अटेम्प्ट, कितने मार्क्स आपको मिले. प्लीज़ टेल मी दिस. And we are starting with schemes, and today we are going to discuss Ministry of Agriculture schemes. The PDF was re-uploaded on my Telegram channel because I told you to revise the PDF so that you are able to answer these MCQs and you are able to revise also, right? So let us discuss now these MCQs, and let us start with first MCQ that says, so first MCQ says that which of the following statements about PM Kisan are incorrect? Okay, the statement asks you to identify the incorrect statement. It was launched on 24th of February 2019 as a central sector scheme. So that is absolutely correct. It was launched in 2019 as a centrally sector scheme, right? This we all know. Now, all landless farmers including tenants and sharecroppers are eligible. The scheme is implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Beneficiaries receive 6,000 rupees per year in 3 installments. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल मी. आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. एंड द राइट आंसर इज बी. ऑल लैंडलेस फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स आर नॉट एलिजिबल. इसमें सारे जो लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स होते हैं दे आर एलिजिबल, right? So B is the correct answer because it is a wrong statement, while C and D are correct. Now, if you're also attending my PIB sessions, you would know that in yesterday's PIB I also taught you that 21st installment of PM Kisan is released from Coimbatore of 18,000 crore rupees recently, right? So please connect that fact or that current news from this particular scheme article, right? Now the second question is that which of the following farmers families are eligible for PM Kisan. Now you have to tell me कि इनमें से कौन सी farmer families है तो that would be eligible for PM Kisan. A family owning cultivable land as per state or UT records, a tenant farmer working on someone else's land, a family with retired government officers receiving pension more than 10,000 rupees per month, और a family of professionals like doctors, lawyers and engineers. तो इसमें से कौन सी फैमिली है जो एलिजिबल रहेगी फॉर PM किसान स्कीम. सो सबसे पहले डी को हम हटा सकते हैं. वी नो कि डॉक्टर्स, लॉयर्स दे आर एक्सक्लूडेड. देन वी ऑल्सो नो कि जिसकी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा पेंशन आ रही है दे वुड बी एक्सक्लूडेड ऑब्वियसली. एंड वी ऑल्सो नो अ फैक्ट ऑन PM किसान दैट इन PM किसान land holding farmers are included. Okay, land holding farmers are included. अब A और B में if you have confusion, option A says a family owning cultivable land, मतलब इनके पास land है, and second is a tenant, right? He is working on someone else land. और यहाँ पर हम PM किसान में we are including all those farmers जिनके पास land है, they are land holding farmers. So A would be the right answer and B would be wrong. So A is the correct answer, and likewise you have to remember this. Now see some quick facts on PM Kisan. PM Kisan was launched in 2019. It's a centrally sector scheme. Ministry is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Now who all are eligible? जो land holding farmers families है, they are listed as cultivators or owners in land records. And what will a family be considered? अगर husband है, wife है and a minor children is there, तो इसको हम एक family मानेंगे.
और ये सारे लोग इनएलिजिबल होते हैं। लैंडलेस अगर फार्मर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, टैक्स पेयर्स, रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा पेंशन है, प्रोफेशनल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डिंग फार्मर्स। सो ऑल दीज आर इनएलिजिबल फॉर पीएम किसान, राइट। सो आपको याद रखना है इनएलिजिबल और एलिजिबल में मेन जो कन्फ्यूजन का पॉइंट हो सकता है दैट इज़ रिलेटिंग टू लैंड होल्डिंग एंड लैंडलेस, राइट। सो आपको याद रखना है इस पर लैंडलेस फार्मर्स आर नॉट इंक्लूडेड while land holding farmer families are included. So this particular point you have to remember from PM Kisan. 6,000 rupees are given, 3 installment of 2,000 rupees each every 4 months is given. Then there is something called as Kisan E-Mitra AI chatbot जो कि पहला first AI chatbot है in any flagship scheme. So now quickly let's move on to next question because otherwise that ways हम बहुत late हो जाएंगे हमारे MCQ solve करने में. So quickly let us move to next question that says that which of the following statements about Kisan credit card scheme are correct. Now the second scheme that we are talking about, okay, I also forgot that this is the second question. Also please answer, please calculate your scores. First question, then this is the second question. उसके बाद now this is the third question, right? So please also calculate your scores. आपको कितने marks आ रहे हैं? How many right answers you are giving? So which of the following statements about Kisan credit card schemes are correct? Now this is a Kisan credit card scheme. And it is asking to us about the correct statement. Now let us read 4 statements. It was launched in 1998 based on R.V. Gupta committee recommendations. Nodal ministry is Ministry of Finance. Implemented through commercial banks, RRBs and cooperative banks. The objective is to provide short-term credit for cultivation and allied activities. I hope आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा because it's not Ministry of Finance, it's Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And you have to remember it was launched in 1998 on basis of R.V. Gupta committee recommendations, right? So आपको याद रखना है objective भी and ये किस द्वारा implement की जाती है. So B is the correct answer. In incorrect and which of the following statements are actually correct? तो A, C and D are correct and B is incorrect, right? उसके बाद now the fourth question is that which of the following statements about interest subvention under KCC are correct? यानी इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड ओनली. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीज आर एलिजिबल फॉर बेसिक सबवेंशन ऑफ 2%. यानी 2% सबवेंशन के लिए जो लोन की एलिजिबिलिटी है दैट इज़ 3 लाख रुपीज़. देन PRI दैट इज़ प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड्स एन एडिशनल 3% रिबेट. इफेक्टिव फिर वो जो इंटरेस्ट रेट हो जाता है दैट इज़ 4%. कोलैटरल फ्री लिमिट इज़ 3 लाख रुपीज़ फॉर ऑल फार्मर्स. कोलैटरल फ्री लिमिट कितनी है? कोलैटरल फ्री लिमिट अभी रिसेंटली 1.6 लाख से 2 लाख कर दी गई है. सो D इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट while D इज़ इनकरेक्ट. सो आपको याद रखना है दैट the collateral limit was recently increased from 1.6 lakh to 2 lakh rupees. It is still not 3 lakh rupees, but 3 lakh rupees क्या है? 3 lakh rupees तक का interest subvention is eligible. तो इसलिए I've included both the statements ताकि आपको कोई confusion ना हो कि इसमें 3 लाख रुपीज़ भी दिया है, 2 लाख रुपीज़ भी दिया है. सो दिस इज़ फॉर डिफरेंट थिंग्स, राइट. 3 लाख रुपीज़ का लोन इज़ एलिजिबल फॉर बेसिक सबवेंशन कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, सबवेंशन कितना मिलेगा. एंड कोलैटरल फ्री लोन आप कितना ले सकते हो? 2 लाख रुपीज़ तक का ले सकते हो. सो 3 लाख रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड 2 लाख रुपीज़ फॉर कोलैटरल फ्री लोन्स. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इट इज़ फिफ्थ, राइट? येस. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज़ व्हाट? तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हमने पढ़ी थी. वी स्टडीड अबाउट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एंड वी वर स्टडिंग अबाउट स्कीम्स एंड वी स्टडीड दैट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बिफोर 2022 was 2%. आफ्टर 2022 इट इज़ नाउ 1.5%. तो एडिशनल PRI कितना मिलता है? PRI इज़ एडिशनल 3%. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर ऑन टाइम रीपेमेंट इज़ 4%. सो इसमें सारे ही सही है. येस. सो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The answer options I would have given was A, B, C, A, D and A, B, C, D. So answer would be 4, that is A, B, C, D. All 4 are correct.
जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है दैट इज़ 4% आफ्टर डिडक्टिंग PRI एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5%, जो कि कई जगह 2% भी दिया है, सो 4% आता है. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज the sixth question is that the loan coverage and interest under modified interest subvention scheme is what? इसमें आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने स्टेटमेंट्स गलत हैं. सो लोन कवरेज एंड इंटरेस्ट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज़ व्हाट? शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीज़ एट 7% इंटरेस्ट रेट. तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 3 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है एट 7% इंटरेस्ट रेट. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. अब इसमें अगर PRI मिल जाएगा 4% का, 3% का, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 4%, राइट. दिस वी स्टडीड अब. उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज लोन कंसेशनल बेनिफिट अप टू 2 लाख रुपीज़. नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. इसका मतलब ये है दैट अगर क्रॉप के लिए द इंटरेस्ट रेट जिस पे हमें मिल रहा है लोन अप टू 3 लाख रुपीज़ इज़ 3 लाख रुपीज़, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के लिए वही अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है, राइट. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. Effective tenure is 1 year. Then effective interest rate is 6%. So wrong. Effective interest rate is 4%. So please remember this, that effective interest rate is 4%. Now seventh question is on agriculture infrastructure fund, right? Agriculture infrastructure fund. Now I have not given full form of anything क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आता है. शॉर्ट फॉर्म्स आर ओनली asked, so you have to be well versed with all these short forms. Now which of the following statements are correct और कितने इनकरेक्ट इसमें से? Fund size is 1 lakh crore rupees to be disbursed over 10 years till 2032 to 33. Loan tenure is up to 7 years. Interest subvention इस पर मिलता है 3% per annum on loans up to 2 crore rupees. Moratorium is 6 months to 2 years depending on activity. So which of the following statements are correct and which of the following statements are not correct? Please answer, and I hope कि आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा 7 स्टेटमेंट का. एंड द राइट आंसर इज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. फंड साइज कितना है? इज 1 लाख करोड़ रुपीज़. इट इज़ 1 लाख करोड़ रुपीज़. उसके बाद लोन टेन्योर इज 7 years. इंटरेस्ट सबवेंशन इज 3% अप टू 2 करोड़ रुपीज़. And moratorium period is 6 months to 2 years depending on activity. तो ये facts जो है वो आपको याद रखने हैं on agriculture infrastructure fund, right. Now the 8th question is credit guarantee under agriculture infrastructure fund is what? So credit guarantee कितना होता है under agriculture infrastructure fund? They're covered by CGTMSE. CGTMSE मतलब Credit Guarantee Trust for Medium and Small Enterprises. It is for loans up to 2 crore rupees. No guarantee coverage is available for FPO, so that is wrong. FPOs के लिए भी guarantee coverage available है. First statement is correct. Then enhanced coverage for FPOs through Nav Sanrakshan Trustee Company Limited. So this is correct. And loans above 2 crore rupees are eligible for credit guarantee. This is wrong because loans below 2 crore are eligible for credit guarantee but not above. So इसमें से कौन से statements correct है, कौन से incorrect है? So the right answer would be 1 and 3 statements are correct and 2 and 4 statements are wrong. So you have to remember all this information on alternative investment fund. Now what you have to remember? You have to remember that agriculture infrastructure fund. I'm really sorry if I said alternative investment fund. It's agriculture infrastructure fund. Wait a second. It's agriculture infrastructure fund. Now what you have to remember, the fund size कितना है? Fund size is 1 lakh crore rupees that has to be disbursed over 10 years till 2030 to 33. Beneficiaries are PACS, FPOs, agri entrepreneurs, startups, central state agencies, APMCs, SHGs, joint liability groups, etc. Loan tenure is up to 7 years. Interest subvention is 3% per annum up to 2 crore rupees. Credit guarantee fund is for up to 2 crore rupees. Moratorium is 6 months to 2 years. So in short, I have given you all the facts at one place जो आपको याद रखने हैं. So please remember this particular features table, right. Now the 9th question is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नमो ड्रोन दीदी आर करेक्ट. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स हैं जो नमो ड्रोन दीदी के लिए सही हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट वॉज लॉन्च ऑन 30th of November 2023. ड्यूरेशन इज 2023-24 to 2025-26. द बजट आउटले इज 1261 करोड़. एंड व्हाट इज द टारगेट? हमें 15,000 वुमेन्स को इक्विप करना है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इक्विप करना है विद ड्रोन्स. सो दैट इज द टारगेट अंडर नमो ड्रोन दीदी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? All the following statements are correct. So answer becomes all the above. All the above statements are correct. Duration is 2023 to 2024 to 2025-26. Then it was launched in the year 2023. 1261 crore rupees is the target, and the target budget is 1261 crore rupees, and the target is 15,000 women SSGs को हमें equip करना है with drones. Now the 11th question number is that target beneficiaries इस स्कीम के अंदर क्या है. So this is 15,000 I have already given, so don't include this as 11th. We'll count not 11th, actually 10th it would be. So now we will count this as our 10th question and this as our 11th question. So please answer that under the scheme financial assistance कितना provide किया जाता है. 50% on drones plus accessories, 80% subsidy on drones plus accessories up to 8 lakh rupees, 100% loans from banks, no subsidy, only loan. So please answer कि financial assistance कितना provide किया जाता है for नमो ड्रोन दीदी. So the right answer would be that 80% subsidy is provided up to 8 lakh rupees. राइट. एंड बाकी का जो 20% है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आता है, दैट वी वर डिस्कसिंग प्रीवियसली. नाउ expected income per SHG through rental services would be what? Now this is talking about drone rental services, right? तो जो rental services रहेगी और ये जो सारी सर्विसेज हम नमो ड्रोन दीदी के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उनको इक्विप करेंगे, तो उससे उनकी जो इनकम बनेगी वो एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी? 50,000 rupees, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees or 25,000 rupees per year. So the right answer is 1 lakh rupees per year would be the expected income per SHGs that we are targeting. Right? So please remember this, 1 lakh rupees. Now 12th question is, the training provided under Namo Drone Didi includes what? तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, what does it includes? ट्रेनिंग में पहला ऑप्शन इज पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है 5 days बेसिक्स प्लस 10 days एग्रीकल्चर यूज, ड्रोन यूज. सेकेंड इज ड्रोन असिस्टेंस इज देयर, ड्रोन असिस्टेंट इज देयर जिसका काम क्या है? रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टास्क देखना. पायलट्स लर्न्स ओनली रिपेयर वर्क्स, असिस्टेंट ऑपरेट्स द ड्रोन इंडिपेंडेंटली. सो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? आई एम होपिंग कि आपने अच्छे से गेस कर लिया होगा, क्योंकि वी कैन ईजिली एलिमिनेट थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट एकदम गलत है. ऐसा नहीं हो सकता कि पायलट को सिर्फ रिपेयर वर्क आता हो. 15 days की ट्रेनिंग वुड बी देयर, जिसमें 5 दिन का एविएशन बेसिक वुड बी टॉट एंड 10 days एग्रीकल्चर ड्रोन यूज वुड बी टॉट. देन देयर वुड बी ड्रोन असिस्टेंट जो रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टास्क को समझेगा. सो देयर वुड बी 2% पर SHGs, राइट? सो 1 and 2 इज द राइट आंसर. सो इसमें से आपको क्या याद रखना है? ड्रोन पायलट वुड बी द मेन ऑपरेटर. 5 days वो सीखेंगे हाउ टू फ्लाई द ड्रोन सेफली. 10 days कैसे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग दे लर्न. फिर ड्रोन असिस्टेंट होगा जो रिपेयर, मेंटेनेंस सीखेगा. सो एवरी सिलेक्टेड SHG विल गेट 2 trained persons. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ आई एम होपिंग 13th question it is. Right. So 13th question, please answer. Now we are talking about AgriSure Fund. Right? AgriSure Fund. So now, so your options are provides blended capital funding for high risk or high impact agri rural startups. AgriSure Fund का क्या काम होता है? Does it provides blended capital funding जो भी रूरल स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए? अगर आपको AgriSure का फुल फॉर्म पता है then it would be very easy for you to answer, because AgriSure का फुल फॉर्म क्या होता है? That is Agri Fund for Startups and Rural Enterprises. So it is a fund for startups and rural enterprises. So A is the correct answer. Now 14th question is that what is the total corpus of this fund? Is it 500 crore, 750, 1000 or 1261 crore rupees? Please answer this question, the 14 number question, and the right answer is B, that is 750 crore rupees is the total corpus. Now 15th and 16th question are this. It says
that the AgriShare fund is managed by Ministry of Finance, NEV Ventures, SEBI directly or commercial bank. So this fund is managed by subsidiary of NABARD, that is NEV Ventures. So B is the correct answer. What is the funding mix of AgriShare fund? Now AgriShare fund का total corpus कितना है? 750 crore. Now what is the funding mix of this 750 crore? Is it 250 crore Government of India, 250 crore NABARD and 250 crore private institutions, or 500 crore Government of India and 250 crore private institutions, or 750 crore Government of India only, या फिर 300 crore NABARD and 450 crore private? So please try to answer this question, and the correct answer is A. It is the funding mix is divided into 250 crores, 250 crores and 250 crore within Government of India, NABARD and private institutions. So A is the correct answer. Now see, these two are components of AgriShare fund. So 750 crore का total corpus है, right? एंड एग्रीशॉर फंड में एक है फंड ऑफ फंड्स जिसका टोटल कॉर्पस इज 450 करोड़, और उसके बाद एक और है डायरेक्ट स्कीम जिसका कॉर्पस इज 300 करोड़. अब डायरेक्ट स्कीम मतलब जब वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्टार्टअप अप टू 25 करोड़ पर स्टार्टअप, राइट? एंड फंड ऑफ फंड्स मतलब जब वो किसी और वेंचर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन इन्वेस्ट 5% और 25 करोड़ जो भी स्मॉलर है, राइट? सो दिस इज एग्रीशॉर, दैट इज एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस. नाउ 17th question is on ENWR pledge financing, जिसको NPF कहा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, एंड ENWR stands for negotiable warehousing receipt, राइट? तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए बिकॉज शॉर्ट फॉर्म से ही पेपर आता है, फुल फॉर्म नहीं आते हैं, राइट? नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट. नाउ दिस स्कीम फॉर ENWR प्लेज फाइनेंसिंग, जिसे हम शॉर्ट में NPF बोलेंगे, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2023, 24, 25 और जनवरी 2025 और फरवरी 2025. So please try to answer. The correct answer is February 2025. It was launched in February 2025. Now what is the corpus of this fund, this particular fund? जैसे हमने corpus देखा था इस ऊपर वाले AgriShare fund का 750 करोड़. The right answer for this would be what? Please try to answer. So the right answer would be 1000 करोड़. इसका total corpus is 1000 करोड़ rupees. Now 19th question is on credit guarantee scheme for WS. Now WS stands for what? WS stands for what? It stands for warehousing sector. So it was launched in the year 2023 and the total corpus of this is what? It is 500 crore rupees. But our main focus is on this scheme that is launched in February 2025, that is NPF, CGS NPF scheme. So now answer the following questions on this scheme. That says, 21st question is that what is the maximum loan coverage under CGS NPF scheme? So up to 75 lakh rupees for agriculture purposes loan covered है, up to 2 crore rupees for non-agriculture purposes का loan covered है, up to 50 lakh rupees for all borrowers और only for post harvest loan. So please try to answer कि कितना maximum loan coverage is there under negotiable under this ENWR pledge financing, that is NPF scheme. So the right answer is A, 1 and 2. 75 lakh rupees का loan for agriculture purposes and 2 crore rupees तक का loan for non-agriculture purposes, right? So please remember these two facts. Now 22nd question is that what is the guarantee coverage that is provided under this scheme? So it's 85% for small loans up to 3 lakh rupees, फिर 80% for loans between 3 lakhs to 75 lakh rupees, 75% for other borrowers and 90% for all loans above 2 crore rupees. So please try to answer this question. What is the guarantee coverage that is provided? Now what is guarantee coverage? Guarantee coverage मतलब अगर लॉस हो जाता है, लोन नहीं हम चुका पाते हैं, लोन लॉस हो जाता है, तो what would be the percentage that would be returned to bank? So that's the guarantee that is given. Now what is the guarantee that would be returned? If the small loans are up to 3 lakh rupees, then 85% guarantee. If from 3 lakh to 75 lakh rupees, then 80% guarantee, and बाकी के लिए 75% guarantee. There is nothing such as 90% for all loans above 2 crore rupees. So A is the correct answer. Now 23rd question is that duration of PM Dhanya Krishi Yojana is what? It's 5 years, 6 years, 4 years or 7 years. And what is the coverage of this scheme?
सो पीएम धन धान्य कृषि योजना का टोटल ड्यूरेशन इज 6 years, 2025-26 to 2030-31, and the coverage is what 100 districts are covered under PM Dhan Dhanya Yojana. So C is the correct answer. Now there is something called as Mission for Atmanirbharta in pulses. अभी कृषि धन धान्य योजना we studied that the total year was 6 years, right? अभी इसका भी it is 6 years. So please remember this, don't get confused. And Mission for Atmanirbharta in pulses was also launched in which year? So it is also launched in the year 2025 to 26, and the duration is what? It is 6 years. Now 27th question is what? So 27th question is that what are the implementing agencies for MSP based procurement? So what are the implementing agencies? NAFED, NCCF, FCI or NABARD. So this I have taught you previously also that 4 years का agreement is also done with between two entities जो implement करने वाली है MSP based procurement. Now which 3 pulses are covered under this scheme? So that is tuar, moong and urad, right? These 3 pulses are covered. Now I think wait, not moong, sorry, it's masoor. Masoor, tuar and urad pulses are included under this mission. Now which two entities have which two are the implementing agencies जो implement करने वाले हैं इस स्कीम को, एंड उसके लिए 4 years का एग्रीमेंट भी फार्मर्स रजिस्टर करेंगे इस मिशन के अंदर, एंड 4 years का एग्रीमेंट वुड ऑल्सो बी साइंड. So please tell me the answer is 1 and 2, that is NAFED and NCCF will come into an agreement of 4 years of a 6-year mission, right? So please remember, don't get confused. Mission ka duration is 6 years but the agreement duration is 4 years, right? That would be done within NAFED and NCCF. So A is the correct answer. Now this was 27th question. So that's it for the day. I hope you like the class. From now next class में we'll continue with Ministry of Agriculture questions, but then we will proceed with further questions. तो now अभी हमने आज डिस्कस किए हैं टोटल 27 क्वेश्चंस, एंड आई वांट यू टू टेल मी कि आपके 27 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने गलत निकले. आर यू लर्निंग वेल? आर यू ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग? आर यू रिवाइजिंग योर स्टैटिक PDFs and are you benefiting from these sessions? Please tell me all this. Please like, share and subscribe. Please join our Telegram channel. Link would be provided to you in the description below. And thank you for watching.